Welcome to the special edition of DD Dialogue NAYA KASHMIR Winds of Change from Srinagar, which we bring to you exclusively from this most majestic and iconic botanical gardens nestled in the heart of world-famous Zabarwan Hills and Tulip Gardens on my right. NAYA KASHMIR Winds of Change is our special presentation here from Srinagar. Well, it's been close to 6 months post-abrogation of discriminative Article 370, and since then we have seen Modi government's specific focus on fostering peace and development in Jammu and Kashmir, and also at the same time aligning it with normalcy. Well, this is our effort at the behest of national broadcaster to give platform to the people of Kashmir to speak their mind post this monumental decision of abrogating Article 370, to give them platform so that they speak their mind, their aspirations, their challenges, their apprehensions, if any, basically the way ahead, the road ahead when it comes to the narrative of Naya Kashmir by Prime Minister Modi, marking various beginnings, new beginnings, whether it is politically or economically or in education sector and much more. And as we start the show, viewers, let me also tell you, all of them have travelled and they've come from far-flung areas, some of them from North Kashmir, from South Kashmir. And to begin with, I would like to in fact start the opening remarks. G.H. Khan साहब हमारे साथ मौजूद है. He's PDC chairman, Badgam block. Khan साहब, ये बताइए, how much of recovery has been made so far? How much of normalcy has finally been restored? It's been 5 months now, in fact, close to 6 months now. Work is under progress, but are we now finally, when we talk about Kashmir, Srinagar, are we finally on positive trajectory, development trajectory? मेरी तरफ से मेरे सारे देशवासियों को आदाब सलाम इस हसीन वादी की में बैठकर. यस मैम, जहाँ हम कश्मीर की बात करेंगे, let me speak in Urdu. Sure. Because my people, my countrymen are listening and they know Urdu. जहाँ हम पीस की बात करेंगे, हम कश्मीरी ने दिखाया, हम खामोश बैठकर, हम पूर्ण अमन लोग हैं. हम इन 5 महीनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने क्या किया, क्या उनको अच्छा लगा, क्या उनको करना यहाँ मुनासिब समझा, उन्होंने किया. हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि कश्मीरी अमन पसंद है. हमने अपना अमन दिखाया. अब भारत गवर्नमेंट को दिखाना है कि वो हमारे लिए क्या करेगी. हमारे इस वक्त यूथ जो खामोश बैठे हैं, उस खामोश बैठे यूथ को उनके हाथों में रोजगार दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना काम तो कर लिया. अब काम करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. यहाँ नए कश्मीर की इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से बनाना है. नए इसी यंग यूथ से नई लीडरशिप को लाना है. ये जो पॉजिटिव, मीर आप बताएं जरा, ये जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, एक आम कश्मीरी का, व्हाट इज द अंडरलाइंग सेंटिमेंट नाउ? What are the expectations? How do you propose to move forward now? First of all, I'm very thankful to the Doordarshan that they have given us this platform to express our feelings. And Doordarshan is the one among the few channels, national channels, which always have represented the aspirations of the people of Kashmir. Coming to the point, what are the positive expectations from the people of Jammu and Kashmir? See, I'm the BDC chairman from Baramulla, and I have been elected by the people recently after the abrogation of 370. There are a lot of expectations from the government. People always want that what our Home Minister, Honorable Amit Shah ji, on the day of abrogation of Article 370, promised on the floor of the Parliament. Those all promises should be fulfilled on the ground. As on date, आज के डेट तक, I don't know what are the reasons. गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ ऊपर से जम्मू कश्मीर को लेके, आई होप कि दे आर पॉजिटिव. एंड जो भी हमने देखा है आज तक, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट्स है, चाहे हमारे होम मिनिस्टर की कमिटमेंट्स है, दे आर पॉजिटिव टूवर्ड्स द कश्मीर. बट ऑन ग्राउंड आज के डेट तक आई हैव नॉट सीन कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कहीं किया गया हो. पीपल आर सफरिंग. ऐसे भी एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, हो रहा है यहाँ पे कि बिफोर, अगर जो हम पुराना कश्मीर देखें, पुराना कश्मीर नए कश्मीर से बेहतर था. ऐसी भी नैरेटिव्स आज क्रिएट किए यहाँ पे है. हमें नैरेटिव्स तो बहुत क्रिएट हुई हैं. एब्रोगेशन के टाइम ये भी नैरेटिव था कि कश्मीर लॉकडाउन में है, लेकिन लॉकडाउन में नहीं था. सवाल ये है कि अब सही नैरेटिव क्या है?
सही और narrative. सही मुस्तकबिल आगे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? People across the regions, across the religions, across the sects, they Hmm. should brought on the table पे लाना है, चाहे बातचीत होनी चाहिए. There should be the process of dialogue, वो start होना चाहिए. लोगों को जो भी discriminations आज तक थी वो ख़त्म होनी चाहिए. उल्फत हमारे साथ है। उल्फत बहुत दूर से आई हैं। ये पंच हैं अपने गांव की। उल्फत हमें बताएंगी। उल्फत सबसे तो बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आई। आप अपने थोड़े गांव के बारे में बताएं और जो यहाँ की सरकार ने बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। तत मुश्किलात वारिया तो अस कोर बैक टू विलेजस मज दित लगभग 1 करोड़स दिस कम तथ मज आव ना बिल्कुल कहें तथ मज दितुक पत 1,07,000 रुपये तथ मज हेक ना कोश ति करित कहें क्या लुको चुनावी तत पंच सरपंच चुनावी तिहद खदमत खतर मगर अस हेक तिहद खतर कहें बिल्कुल कर तो वन यहान गवर्नमेंटस अपील करान कि अस दियो तुम फंड्स कह तो करो पन्ने गांव खतर करो कह बे सारे खुद बेरोजगारी तो B.Ed M.A PG कर मान तत कोर लड़के तिमन सानिस गांवस अंदर कहें ती स्कीम वातान कहें ती चीज सानिस गांवस अंदर वातान ना बिल्कुल न कहें वोट निन खतर वोट निन खतर सारी करो हू एट लास्ट पे कहें ती कह करान तो वोट मकलावन नित पत जान हर खन गसान तौर पे दपान बिजी चाहे कस ति गवर्नमेंट तो सानिस गामस मज वोत कहें ति फायदे वोत बिल्कुल न कहें फार फुलिंग एरियास मज वुकस तत 3 फुट शीन वुकस मान तुत ति मसल गसान पे जार पार कर सारे तुल तो शीन हु करू यह करू मगर ये जार पार करान तेली कह सारे खुद कॉपरेट करान कहें ति मान कह डिपार्टमेंट पंचन सरपंचन सत कहें ति कॉपरेट करान कि मान कह ति मुश्किलात वनह तिम कॉपरेट करान कहें क्या तिमन सोन यपानी कि 5 सरपंच तिम दपान खबर कम कि तम खतर गवर्नमेंटस करान अपील कि सान खतर तु करो क्या फार फुलिंग एरियास मज गामस में ना DC आमुत बैक टू विलेज शुरू गोमुत ना DC सोब आमुत कह तो बाकी आमुत सारी तम सात आमुत तो तिमो कोर मान तत सारे खुद करान तत GRS बे VLW तिमो योत थोड़ा कॉपरेट करान बाकी करान बिल्कुल is telling us that the mainstream politicians, they have a sense that they cheated them earlier because she represents one of the remotest village there in Badgam, and she says they have been devoid of development for a very very long time, and this back to village program, they have lots of expectations from back to village program. But Tausif, coming to you, education has been the worst hit. Besides tourism, besides industry. In fact, we have Imran also here. He'll be talking about the industry expectation. But is this old school political setup here when mainstream were now detained? Do you think you are now ready for new political beginnings? First of all, I congratulate you that आपने इस तरह का जो आज प्रोग्राम यहाँ पे किया. अक्सर टीवी पे देखा जाता है कि हम अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाते हैं, हम बात नहीं कर पाते, इतना शोर होता है. और हम थैंकफुल है दूरदर्शन की टीम के लिए. जो आपने सवाल पूछा बहुत ही करेक्ट सवाल पूछा. मैं अक्सर अपने नौजवानों को बोलता हूँ आज के टाइम में कि हमें आप लोगों की ज़रूरत है. मैं यहाँ पे क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं कोई लीडर हूँ या मुझे लीड करने दें. मैं जो यहाँ पे सेंसिबल लोग हैं, सेंसिबल हमारी जो यूथ हैं वो आगे आएँ. और मुझे जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई है मुझे एक होप दिखाई देता है. और जो कश्मीरी नौजवानों ने 80s से जो सहा है, जिस कॉन्फ्लिक्ट और जिस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का वो शिकार हुए हैं, जिसमें नेपोटिज्म था, जिसमें रेड टेपिज्म था, और जब भी हम कोशिश करते थे इनसे कांटेक्ट करने की, हमें कोई स्पेस नहीं थी. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पे किसी का रिश्तेदार होता था उसको स्पेस मिलती थी. है आपके पास? मुझे लगता है अब हमारे पास स्पेस है. और जो भी होता है मैं बिलीव करता हूँ बहुत ही अच्छे के लिए होता है. Let's quickly move on. Positive बात बोली हमने. साजिद, space है, you agree, because you've also been very vocal about issues. Do you think now it's time to move on and the new generation is all set to march ahead? See, I see that there's a lot of political space right now. We need to fill that vacuum. Like Tausi bhai, he was talking about many things. तो मैं उस चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास पॉलिटिकल वैक्यूम है. तो जो यहाँ की जो यूथ है उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. और जो सहयोग, जो उनको गवर्नमेंट के साथ सहयोग करने की ज़रूरत है कि जो वो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसको फिल करें. Majid Hadri, your thoughts on it? And I want to also ask you, Majid, you've been very, very vociferously speaking about the challenges post-abrogation of Article 370. Is that propaganda
misinformation about Article 370, fake news. Is all that now thing of past? What I'm trying to ask you, Majid Hydari, have the people of Kashmir actually got grip of what Article 370 is? What are the benefits when you are the Union Territory residents? Are people slowly coming in terms with it? Have they started accepting it? And all that negativity is slowly fading away? See, Sakal, as a journalist, I have been a critic of the BJP government, but criticism can't be for the sake of it. Let me say something has been phenomenally good for the people of Kashmir since August 5, 2019. And the first major achievement I would say is that for the last 6 months, there has not been a single civilian being killed by security forces. And I would say that is the biggest achievement of the Modi government. And I, as a Kashmiri, need to accept that and congratulate Modi government for that achievement. Okay. And the second good thing was that during those days of crisis in Kashmir, there was a clampdown, but there was no humanitarian crisis. There was no crisis of medicine, no crisis of fuel, no crisis of ration. Even those days we had our Eid ul-Azha. But even the sacrificial animals were abundantly available. I would say there was no crisis. But that was that part of the story. The other part is what about the promises made by the Modi government? Okay, but you will Yes. have to give them time. No, see, it has been 6 months, and with regard to Vikas, what Prime Minister says about You know, Vikas. but it's a monumental decision that was taken. No, but so what do you about- think there will be some see, time? No, see, 6 months is a long time. 6 Okay. months for a 5-year government is a long time. Will it not be incorrect to say, I mean, I want Shahnawaz, your thoughts, I'm coming to you again. Will it not be incorrect to say that nothing has been covered so far? Some ground has been covered. What is your assessment, Shahnawaz? Shahnawaz is a political scholar. You've studied abroad, but you chose to come back to Valley to give it back to your own people. So you also come from Badgam. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 पहले हमें ये जानना चाहिए जो पहली सिचुएशन थी 5 अगस्त के बाद की सिचुएशन जिसको हम नया कश्मीर कहते हैं वो कश्मीर रियली डिफरेंट है प्रीवियस कश्मीर से अगर डिफरेंट है तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम एब्रोगेटिंग आर्टिकल अभी है क्या फिर? अभी तो नया कश्मीर की बात हाँ है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अभी अनसर्टेनिटी है जैसे मैं देख रहा हूँ लोगों में ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी है पीपल डोंट नो व्हाट टू डू वेयर टू गो बिकॉज अभी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुई है व्हाट इज़ नीडेड इज़ टू स्टार्ट ए जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन हो लोग पार्टिसिपेट करें और फिर जब वो चुन के आ जाएं चाहे वो नए लीडर हो या पुराने लीडर हो मैं ये समझता हूँ कि सारे हो लेवल प्लेइंग हो ऐसा ना कि जैसे हम कह रहे हैं स्पेस है स्पेस ये So नहीं है आप कह रहे हैं कि वैक्यूम है और एक पॉलिटिकल प्रोसेस की जरूरत है पॉलिटिकल प्रोसेस the basically what we are trying to understand here, please give mic to the gentleman. Mr. Gilani, are you ready for a political process now? Yes, ma'am, I mean, do you echo absolutely. the same sentiment? एक्चुअली देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस का देखा जाए तो पहले क्या होता था अब करना क्या है ये खासकर यहाँ के यूथ को सोचना है अगर यूथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है तो उन्हें आगे आना चाहिए फिर भी इतना देखने को मिलता है कि आज का जो यूथ है वो आगे आ रहा है इवन सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड है आगे आ रहे हैं तो दूर दूर से भी आते हैं यहाँ के लोकल भी मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा तहसील करना का हूँ तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो लोकल यूथ है आज तक उनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की उन्हें कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला इवन कि वहाँ के जो वहाँ का लोकल यूथ है उनको पढ़ने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है एजुकेशन हासिल करने के लिए इस टाइम विंटर्स का टाइम है रास्ता बंद है रोड बिल्कुल वहाँ की ऐसी हो चुकी है कि मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह वगैरह सब कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई ख्याल ही नहीं करता वहाँ पे भी यूथ है वहाँ पे भी इंसान रहते हैं ना तो उनका ख्याल करें तो ऑब्स्टेकल्स क्या है जी हम देख रहे हैं जिस तरह से पहले हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने हम जो यहाँ की डेवलपमेंट की बात करें अगर या करप्शन देखें करप्शन में जो J&K एक फर्स्ट टॉप इस पे नंबर पे है इस टाइम तो मैं पहले ये देखूँगा कि जो डेवलपमेंट की जो बात है वो आज का यूथ कर रहा है तो हम चाहते हैं जो कश्मीर के जो यूथ हैं तो वो आगे आए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस टाइम पॉलिटिक्स में आने चाहते हैं और वो एक नया फ्रंट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो लोग आगे आएँ ताकि आगे जाके जो भी हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं या कोई भी मसाइल हैं तो लोगों तक वो पहुँचे आपने पॉलिटिकल स्पेस की बात की you somebody in fact you've represented Congress way back then now I don't want to hijack this discourse by talking politics, but you think there is some sort of third front? Kashmiri youngsters are willing to come forward and give representation to their own people? Sakal, first of all, I congratulate you like all others who congratulate you for holding such debate over here and giving us opportunity to express our views.
as far as Kashmir is concerned, we cannot talk anything except politics. Because post abrogation, when you talk about Article 370, many reasons were given why they are abrogating 370. There are reasons were given. There is nepotism, there is corruption, there is unemployment, there is dynasty politics. And with those reasons, also some promises were given that all these things will be like, there will be employment. But Rome was not made in one day. Right, You right. will have to give some time. Right. Let's be realistic. Let me speak. Yeah. So, when you talk of third front, when you talk of new front, No, my question is that third front in making? No. Do we have that? people are not angry when the delegations come, when the European delegation come, when our ministers come with the delegation. People are not angry why they are here. People are angry with whom they are meeting. If they are meeting, they should meet the grassroots people. When you talk about youngsters, whom they should meet? They should meet those youngsters who are on actually grassroots, जो grassroots पे काम करते हैं. Now, if we talk of new movement, एक कश्मीर के इस तस्वीर में नए रंग भरने की अगर कोशिश की जा रही है, तो कश्मीरियों की तो उम्मीद बड़ी है, और उस उम्मीद की आप मानते हैं ना कि कोशिश कर रही जा रही है सरकार अगर कोशिश की जा रही है, लेकिन इन व्हाट डायरेक्शन? आई बिलीव कि जिन लोगों से मिलना चाहिए वो लोग उनसे मिल लीजिए. अगर नौजवान कोई अपॉर्चुनिटी देनी है, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी जो ग्रास रूट पे. आपके साथ सोशल एक्टिविस्ट भी बैठे हैं. अभी जो मोदी सरकार की पहल थी, पहली बार मेरे ख्याल से कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, मीर, यू वुड अग्री, a big delegation of more than 30 senior ministers from the union government came to Jammu and Kashmir. Let me come. You know, this let's accept that there was this attempt, an outreach for Kashmiris. So what I understand now is that कि आपका ये मानना है कि ये एक शुरुआत है, मंत्री लोग आए, लेकिन मंत्रियों को मिलना किससे है, किनसे जाके बात करनी है, वो एक बड़ा सवाल है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है कि वो जो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, उनको किनके साथ बात करनी है, वो शायद इसमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं. अब अगर डेलीगेशन आई यहाँ पे, उनके साथ किसी ने बात की है, तो उनकी भी बात रखी जाए और उन लोगों से भी बताया जाए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ताकि आम लोग जो फारफलंग एरिया से लोग बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ पूछता है भी नहीं कोई. आज 180 दिन बराबर हो गए, आज 180 दिन हो गए इस चीज़ को लेके. आप देखिए बेसिक फैसिलिटी से यहाँ प्रॉब्लम है. यहाँ प्रॉब्लम है, 1 महीना हो गया बर्फ पड़ते हुए, अभी तक रोड क्लियर नहीं किए गए. तो किसी न किसी को सामने आके बात करनी है, इस चीज़ को लेके बात करनी है. Imran, but clampdown internet is also related to banking and industries and tourism, and I've been hearing a lot of I mean, your community, the fraternity, business community has also suffered a lot because of this internet clampdown. I think this is a factor which needs to be zeroed in, especially from banking point of view. जहाँ पे बात हो रही है नया कश्मीर और पुराने कश्मीर की इस टोटल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, द बैडली हिट इंडस्ट्री हैज़ बीन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ कश्मीर एंड द टूरिज्म सेक्टर. After this abrogation and clampdown of internet, industrial sector has been the one which is almost on the verge of closure now. Closure? Yes. Okay. We are waiting for the revival policy, for the revival measures by the government. But it is taking too long, 6 months. The NPA ratio has crossed 25% in the industrial sector. If you talk about the NPA, non-performing assets in banking, for the industrial sector, it is for the first time in the history that it has crossed 25%. Because there is a total 3 months of time when the account turns to be a bad So what should be debt. done? I mean, let's We talk are still waiting for the revival policy from the center. If they are talking about the Naya Kashmir, we are still yet to see what Naya Kashmir is bringing to us. See, Okay, the so clampdown of please go internet, our business, the tax part of it is mainly dependent on internet only, since the implementation of GST. So in absence of internet, how government is expecting us to file the returns? This is the Okay, basic. this is a This is very something genuine basic. point, yes. This is something basic. And apart from this, with the development of the technology, now businesses have moved their backbone to the internet. Internet is a backbone of internet business now. business. And yes. in absence of business, in absence of local, So it's a chain reaction. yeah, one it's a thing chain leads- reaction actually. Okay, so Naya Kashmir, the whole narrative, there has been by and large an acceptability to it, but with that acceptability parameter, there are a lot of doubts, there are a lot of apprehensions, there are a certain amount of uncertainties attached. Well, we are almost halfway through into the show.
the sentiment that really comes up is that revival policies is what is awaited. Revival at various fronts. We're going to slip into a very short break. When we come back, we'll take Naya Kashmir discussion discourse forward on DD Dialogue, special episode from Srinagar. Stay with us. Welcome back after a short Kehwa break. Well, there are many questions looming large when we talk about the narrative of Naya Kashmir. Questions like, how about engaging youth? How about generating more employment opportunity? How about engaging those stone pelters into mainstream society? And most importantly, when we talk about education, which has been the worst hit, what about generating employment opportunities more and more? And Majid Haidari, and the biggest question that we get a sense from Kashmir is that, is Kashmir election ready? Biggest problem and the challenge for Kashmir has always been corruption. Now, I would say that there is a need to give a breather to this electoral process. There is a need to extend the governor's rule, because governor's rule is a kind of a hope where you can have good governance and corruption-free governance. Because the only time in the last 70 years Kashmir had good governance was Jagmohan's rule, which even Kashmiris today say that Jagmohan's rule of 80s, that he was the best governor, corruption-free governance. I think you've made a very pertinent point, but do you agree? But my one point is that we have a very competent LG, Mr. Murmu, but the problem is he is yet to start war against corruption. I mean, corruption as of now is breaking records in Kashmir. I got your point. Let's hit the nail. So corruption is your basic problem as of now. How to weed that out? No, I would like to go back to the basic question. Like you talked about how to, if Kashmir is election ready, I would suggest a way forward. That now we have put the responsibility on the shoulders of the youth. Now it has been, the youth has been told that it's their responsibility, the development, the politics. So, but we need to equip them for that. Okay, very good. This spaces, the space like this are very rare in Kashmir. We just have Youth Service and Supports Council. No debates, no discussions are discussed, who are held in Kashmir, no space, we don't have the spaces for it. Okay, very important point. That's how we sense a political opening. We are yet to sense a political opening. Youth of Kashmir, they're saying that they are yet to sense a political opening, and the positive sentiment that comes up is that yes, they want a political opening here, and how to equip, how to empower Kashmiri youth. How do we do that? What about those auto driver rickshawalas? What about those owners of metro, those local rickshawalas, matadors owners, and the shikarawalas who have been affected by the abrogation of Article 370. So we are too concerned about that. We should definitely, they were expecting some major relief from Honorable Prime Minister. But unfortunately, nothing happened on ground. Basically, daily wages and small-time business establishments, small-scale industries. Yes. I sense there's a lot of restlessness. I think you want to make a quick point. I'm going to come to all of you. Yes. Yes, I would like to speak that students have been worst affected after the post-abrogation of Article 370. So there is a need of an hour for the youth of Kashmir that something should be done for them. We have been discussing the problem. So let us come with a solution. Something should be done so that if we will keep on discussing the problems, there will not be any solution. What is that something, Tausif? Very quickly. I'll come to you. Mike and Khadija. What is that something? I just want to make for young Kashmir. I just want to make two points here. पहली बात, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है वो घुमाएं और सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं. We see hope.
और हमें उम्मीद है जो हमारी जो उम्मीदें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो फुलफिल हो जाए। जिस तरह से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो 70 साल में नहीं हुआ है हम 7 साल में करके दिखाएंगे, हम होपफुल हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं मीर इकबाल साहब, ये जो हम कहते हैं ना क्या हुआ, इकबाल साहब हमारे यंगेस्ट बीडीसी चेयरमैन हैं। ये हुआ क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कभी भी नई डेमोक्रेसी को एम्पावर नहीं किया। जो रियल एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, आज हमारे पास पंचस है, आज हमारे पास सरपंच है, आज हमारे पास बीडीसी। एब्सोल्युटली आप देखें जो उल्फत जी कहाँ से आई हैं और ये बोल रही हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है। हम चाहते हैं, जहाँ पे हम बता दें अपने दर्शकों को, जहाँ पे सरपंच किलिंग्स हेडलाइंस होती थी और आज 370 हटने के बाद उल्फत जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करना चाहती है। मेनी लाइक उल्फत empowered at the grassroots level, viewers, in far-flung areas of Jammu and Kashmir, and Ulfat is just one example. Mir, you wanted to make a quick point adding to Tausif, but let's be realistic. 6 months, at least the hope has been generated in the misinformation campaign. Has that subsided on Article 3? There is a hope. I agree that, but I want to reply to Mr. Tausif. किन्ने कहा कि that I am the product of this thing, जो BDC का election हुआ, otherwise ये तो whatsoever, but I want it should not have been the like this के election for the sake of elections. मैं आपको बता दूंगा, do we know what is the situation of, what is the condition of the BDC chairman, what is the condition of the panch and sarpanch? It's the worst. I will tell you that I am the person who I never have been to my home after winning the elections. We don't have the proper security, we don't have this anything else, we don't have the proper accommodation. इन्होंने तो मतलब I want to add this, इन्होंने recently कहा कि protocol we given to the BDC chairmen, वो दिया भी किसका, DC साहब का. This is insult to that protocol. हमारे BDC chairmen इस वक्त बसों में घूमते हैं. Okay, so grassroots level politics की बात करें, आप भी शायद पंचायत, वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं? एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको कि मैं बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, मैं बिलोंग करता हूँ बडगाम डिस्ट्रिक्ट से। तो ये जो 370 रहे या ना रहे, फिर भी हम डेवलपमेंट चाहते हैं। इससे पहले भी 370 था तो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ का जो जवान है ये आप मानते हैं स्ट्रगल कर रहे थे? यस, तो यहाँ का जो जवान है ये चाहता है, ये स्टेप लेना जरूरी था, है ना? हाँ जरूरी है, क्योंकि 370 रहे या ना रहे तो हम वैसे भी थे और आज भी ऐसे ही है। आपने कहा और हम चाहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है ग्रास रूट लेवल पे मैडम, प्लीज। तो ग्रास रूट लेवल पे हमको दिखता है कि जहाँ आजकल के दौर में हम देखते हैं आजकल बीडीसी ग्राउंड लेवल पे है, बीडीसी चेयरमैन बनाए हैं, पंच सरपंच, हाँ, जो इससे पहले यहाँ गवर्नमेंट थे 70 साल से नहीं चाहा उन्होंने कि लोगों तक पहुँचे। हाँ, आज इससे पहले कि उन्होंने अपने घर बनाए हैं और यहाँ का जो जवान है इसने बहुत सारे मुसीबतें झेले हैं इन्होंने। Okay, I got your point. So बहुत सारे मुसीबतें झेले। One thing is very clear coming to you, both of you in fact, and I'm going to give this opportunity to Shahnaz also. There has been a palpable anger against the mainstream politicians. Your people feel cheated, and now with abrogation of Article 370, there is at least hope. You have a long list of to do, and that's going to be a never-ending process. Actually, I want to add just now, Abhi Majid Saab ne kaha ki that he congratulated Modi government because from last 5 months not a single killing has happened in Kashmir. What I believe is that जब 370 था तो कश्मीरियों को कुछ मिला नहीं, 370 नहीं रहा, कश्मीरियों को कुछ गया नहीं, because people didn't know what actually 370 is, whether it had any benefits, whether it was giving something to Kashmiris. So Kashmiris are confused. Now since it is no more, now what my important point is that right now if there is a vacuum, who should be filled in that vacuum? If you are talking about youngsters, if you are talking about youth, who are these youth? So government of India should think seriously, and 370 is a past. We didn't had anything because we don't know what it actually was, and it was said that. So what's the issue? What's the biggest point at the top of the to-do list is fulfilling the political vacuum? मैडम मैं एक बात बताता हूँ, ये पॉलिटिकल वैक्यूम मैं नहीं मानता हूँ। आपके पास 311 इस वक्त 311 आपके पास बीडीसी है, क्या ये पॉलिटिकल वैक्यूम को इन्होंने फिल नहीं किया? अच्छा, आपके पास 3000 से ऊपर 5 सरपंच है,
पॉलिटिकल वैक्यूम तो हमने कब का ख़त्म किया है, लेकिन आपके फंड्स नहीं आए तो हम लोगों को क्या देंगे? अगर मेरे बड़गांव में 22 करोड़ रुपया आते थे एमएलए एमएलसी का सीडीएफ, एमएलए एमएलसी का सीडीएफ आता था 22 करोड़ रुपए, वो 22 करोड़ रुपया आपने रोक दिए। आप उसको ये उसका बीडीए बना लीजिए, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के फंड में डाल दीजिए ताकि हम लोगों को काम करें। It is one part of the वैक्यूम problem. है। हाँ, at the grassroots level. We are ready. funds, We are funds. ready for election. At for grassroots assembly level, election. the BDCs are saying that we are ready and we are ready to go. Ulfat ji, but they should be empowered and they should be empowered financially. That is financial. आपको अभी funds की ज़रूरत है। हाँ, है। बताएं please. पहले जी बोले। हमको पहले मिला 13 लाख, तो उसके बाद कुछ नहीं मिला, तो हमने वो पहले दे दिया सबको, ऐसे पंचों को अपने अपने वार्ड में खर्च करना है, तो किया हमने। तो उसके बाद बोला फंड्स देंगे, कुछ नहीं दिया। तो अगर कुछ वो देंगे तो हम उनको देंगे। हम लेकिन आप बहुत ब्रेव है माशाल्लाह, आप इतनी दूर से आई हैं, आपको अब डर नहीं लगता अपने घर से बाहर निकलने? नहीं नहीं ऐसा आप सेफ फील करते हैं? हाँ देखो डर कहीं ना बिल्कुल छुना डर कहीं। तो कश्मीर लुको चुनाव पन्ने खदमत खतर येली अस और यी क्या अस ति दिमो तिमन क्या, तो अति बन गसा येली अस पत यी क्या पोंस अस ति दिमहा तिमन क्या अस ति गसा। मोदी सरकार से छु त वारिया उम्मीद त छु बास इंशाल्लाह अस उम्मीद वारिया छ अस उम्मीद तिम करन सान खतर क्या, अस ति करो पन्ने गाम खतर क्या, तो अस ति करो पन गाम रोशन क्या अस छु वनुक तान छु अस कहीं ति फायदे मिलेमुत। इंशाल्लाह छ अस उम्मीद कि आइंदा आसो अस बिल्कुल असल। तो येली गवर्नमेंटस करा अपील, गवर्नमेंट करा अपील तो छु तुन बाकी जनान ते तते पंच छाज अस तते चोर लेडी सरपंच ति छ लेडी is telling us that there are many women who are there. Yes, 50% 30% reservation, 33% reservation at the panchayat level for women, and it's very surprising and actually very very positive also, Sajid, that there are so many women like Ulfat who battling the fair perception are coming out and speaking up. I think that's a fantastic positive story. Exactly, the best example in front of us is that we are here right now and we are speaking without any fear. So Kashmir is not under lockdown. No. And this thing I want to add one more point. मेरे भाई बता रहे थे अभी कि 6 महीने में अभी तक क्या हुआ। मैं इनको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। जब भी यहाँ तक आज आफ्टर मतलब बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब भी कोई यूनियन मिनिस्टर्स या कोई भी बाहर से सेंटर से कोई भी आता था, तब सिर्फ मुझे लगता है 2 परिवारों से मिला जाता था। कॉमन कश्मीरी है उनसे आज मिला जाता है, जैसे बारामूला हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो। अगर आप देख लें जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स थे वो आम इंसान से मिले आज। पहली बार आपने कोई ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं देखा जो उनसे मिले आज। तो जितने ग्रास रूट के जो लोग थे, जो लोगों से चुने हुए, जैसे बीडीसी हो या पंचायत हो, वो उन लोगों से मिले आज। तो पहली बार ऐसा हुआ है आज 70 साल में। और अभी कह रहे थे आर्टिकल 370 की बात कर रहे थे, तो जैसे मतलब आज जो यहाँ की मतलब यूथ जो है उनको आज मौका मिला बात करने का, ये मुझे लगता है पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि, और हमारी जो अभी आप फीमेल्स की बात कर रहे हो, तो आज तक जो अभी आप न्यूज़ हेडलाइंस में ऐसा देख रहा था कि किलिंग्स ये सब हो रही थी। एंड माजिद साहब ने भी कुछ अभी अच्छी बात बोली थी कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के जो अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खून खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि एक भी किलिंग किसी की जानी, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। So is administration, Tausif, let's take the discussion ahead, and you haven't spoken yet, on the right track? I mean, I understand there's a lot of space, lot needs to be covered. Are we on the right track? I just want to add one more thing. जो अभी उल्फत जी ने कहा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे, ये कहते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन बहुत है अपनी गवर्नमेंट से कि आपने यहाँ पे इलेक्शंस करवाए, हमने पार्टिसिपेट किया, गुस्सा ख़त्म हुआ, अब हमें एम्पावर करो। हम भी अपील करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, जो पंचायत है उनको आप एम्पावर करो। जो उल्फत जी ने जो वादे किए हैं वहाँ पे लोगों के साथ, जो उल्फत जी ने वहाँ पे कहा है। Got it. What is also more important is to align this development with maximum sense of normalcy. Normalcy more or less has been restored, in fact 99.9% as they are telling us. But what about development, and most importantly election ready Kashmir, empowering women, empowering youth, and generating more employment and weeding out corruption? In fact, one of the panelists talked about
need for having an extension for the governor's rule here in Kashmir Valley. We talk about Naya Kashmir, new beginnings. तौसीफ बताएं आप. जैसे कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा यहाँ पे फोर फ्रंट पे था, हमेशा, चाहे कोई भी इशू है, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी जो जम्मू कश्मीर. क्या आप वो डर के माहौल से बाहर आ गए हैं? I want to understand this. देखिए, ये जो आपने सवाल पूछे काफ़ी इम्पोर्टेंट था. आप कश्मीर में डर को माइनस कीजिए, आप देखिए आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन 100% होगी, आपका जो नौजवान है वोट डालेगा. जब भी यहाँ पे इलेक्शंस होते थे, ये जो हमारे जो दूसरे तबके के लोग हैं वो किलिंग करते थे. यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की किलिंग हुई है. यहाँ पे जब इलेक्शंस होता था, जब यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस, ULB इलेक्शंस हुए थे, तब भी श्रीनगर में कुछ लोग मारे गए थे. वो लोग कभी नहीं चाहते हैं यहाँ पे पीस हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे डेमोक्रेसी, जो वाकई जो डेमोक्रेसी वो फ्लोरिश हो. But terror footprints have drastically come down, Shahnawaz. Yes, I got your point. I will let others also. Footprints have drastically come down. Stone pelting incidents are almost negligible now, which means I want to understand from you, has maximum normalcy been finally restored in Valley? I have a different view on this. I think that the people who are feeling helpless at this point of time, or what do you mean helpless? They don't want to react to anything. Okay, you might have a different view, but then lack of, in fact, zero protests, very, very minimalistic law and order situation. Majid, I'll come to you as well. Is it not an indication that there has been a larger acceptance? Students, fraternity, see what is happening in Delhi. We don't get to see something like that in Srinagar, even in the worst of times. I'm talking about student activism, taking the streets of national capital on some issue or the other. We never saw something like that when it comes to Kashmiri students here in universities. सबसे पहले मैं दूरदर्शन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया है, और दिस इज़ द रियल एग्जांपल कि सब यूथ खड़े हैं आपके सामने बोल रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट अ लॉट. और अगर हम नॉर्मल सी की बात करें, मेरे लिए नॉर्मल सी ये नहीं है कि दुकानें चल रही है कि बंद है, गाड़ियाँ चल रही है कि बंद है. मेरे लिए नॉर्मल सी ये है कि जब एक नौजवान की, जब मेरे को न्यूज़ आती है कि आज कोई मरा नहीं है, आज कोई कैजुअलिटी नहीं है, मेरे लिए नॉर्मल सी वो है. जब एक यूथ, हमारे कश्मीर का एक यूथ ज़ाया हो जाता है, उससे मेरे सीने में दर्द होता है. अगर हम कहेंगे 370 आर्टिकल जो एक बैरियर था, चलो ठीक है, हट गया ये बैरियर. अब वी आर होपफुल एंड आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया के जो भी हो रहा है सही हो रहा है, यूथ आगे आ रहा है. इससे पहले नहीं था, ये सब नहीं था. दिस इज माय फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मेरे हाथ में माइक है दूरदर्शन की. Really appreciate. Thank you. ये देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूथ जो वेट कर रहे हैं. आप उनके पास जाओ, आप उनसे बात, उनको भी अच्छा लगेगा कि वो अकाउंटेबल है, वो अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं. उनसे कोई पूछ रहा है कि वो क्या चाहता है. मेरे लिए आज़ादी वो है जब इंसान दिल से बोलता है, जब उसको कोई रुकावट ना हो किसी चीज़ में करने के लिए, वो सबसे बड़ी आज़ादी होती है इंसान की. तो मैं, अगर हम, हमारी आइडियोलॉजी डिफर हो सकती है, यहाँ पे भी perceptions different होते हैं. freedom है आपके पास. That's very important. और अगर कश्मीर के नौजवान इतना खुले तौर पे एक सेंस ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि वो अपनी बात आगे रख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करा है और बहुत तहे दिल से, खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया. इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी, आगे आना चाहिए. अगर यहाँ के जम्मू कश्मीर के यूथ्स जो तैयार है इस वक्त, तो उनको ही आगे आना है, उनको इनको देखना है, इनको संभालना है. ठीक है, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हम अप्रिशिएट करते हैं मोदी सरकार को कि कोई किलिंग नहीं हुई. ठीक है, अब इसका फ़ायदा उठाएं. अब यहाँ पे लोग तैयार है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ तैयार होना चाहिए. यहाँ पे इन्होंने, अभी बात चल रही थी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुई है, पंचायत के इलेक्शन हो गए. अगर ये सारे इलेक्शन हो गए हैं तो नया एक पॉलिटिकल फॉर्म, ठीक है, उनको 2 पार्टियों से बेर थे, वो ख़त्म हो गए. अब नया लोग जो यहाँ आना चाहते हैं उनको सामने उनको लाओ, जो आना भी चाहते हैं उनको मौका दे. ओके, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो इश्यूज़ है, बेसिक इश्यूज़ है. आप बेसिक इश्यूज़ की बात हम अगर करेंगे तो अगर हम फारफुला में जाएंगे, मैं बारामूला से बिलोंग करता हूँ, तहसील पटन से. वहाँ के अगर हम एरिया में बात करते हैं, अभी लाइट नहीं है. अभी लाइट की प्रॉब्लम है. यहाँ लाइट, अगर हम शाम को लाइट आती है वो 2 मिनट आती है, 3 मिनट आती है, 4. उन चीज़ों जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वहाँ यहाँ पे नहीं है. उनको फोकस करने की ज़रूरत है. और जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंटेशन है और जो यहाँ पे बेरोजगारी है,
वो बहुत हद तक बढ़ी है, उसको थोड़ा मॉनिटर करने की ज़रूरत है, नौजवानों को प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, उस चीज़ को उनको आना सेंट्रल गवर्नमेंट को, So मोदी I'm सरकार getting a को. point. What he's trying to tell us, he's a political activist himself, that till now, before 370, Imran, this question is for you. The far-flung areas of Jammu and Kashmir, I'm talking about the acute north-south. Kashmir is not Srinagar, right? They were devoid of development, and now the focus is on that. But since you represent industry here, what is your to-do list? See, when we are talking about development, first we need to take care about the collateral damage. Before developing, before climbing up the stairs, we need to see the collateral damage. The collateral damage has to be restored first. What do you mean collateral damage? See, if you talk about the industry specific, if you talk about the manufacturing industry, or you talk about the tourism, or you talk about the transport industry or hotel industry, these have been suffered badly. Okay. We need the revival plan, and within the time frame, because we are running out of time. As I told Why do you earlier, say we are running out of time? 6 months, give it more time. I mean, is it not work see, under progress? I have a unit, I have an industry in Khanmo. We have total number of units. There are 627 units, out of which 25% have been taken away by the bank because they were not able to pay debts within these 6 months. Okay. So that's the time frame, because businesses are turning NPA. Okay, so this is a very genuine concern by the industry representatives here, that most of the flourishing businesses once upon a time are now slowly turning into NPAs, and the government also has to have some sort of concerted plan when it comes to revival of the industrial sector, which also includes tourism industry, and tourism has always been backbone of Kashmir, Jammu and Kashmir. That is something which has almost come to a standstill. Sakal, when you said that why we are running out of time, if any part of your body gets injured, and that part of, I think that part of body needs more. No, but 370 more was a historical decision. That's what I'm saying. When we say that Kashmir is an integral part of India, what I believe is that Kashmir is integral, but it is also injured part of India. So it needs to be, maybe there must be, it may need all surgery also. Okay. And I don't expect right now, I don't expect the evolutionary steps. And what I want from them, some revolutionary steps should be taken, because right now the aspirations are high, the hopes are high. Okay. So they need to address these aspirations, because Kashmir has become the hot topic it's hot topic always. When we see the news at 9, all the news is there, Kashmir is always there, the topic is always there. So that means Kashmir is important, Kashmiris are important. If we are important, so we need special focus, we need special attention. If there should be revolutionary changes, and 6 months, these when you say that 6 months, it has gone too long. And when aspirations go high, it can change into alienation. It can change into alienation. But it has not. I mean, why would we talk about alienation? The very fact that there is not even a zero sense of alienation is that we've managed, all of you here. And in fact, let's tell our viewers, the response to this show has been humongous. Well, on DD's platform, one thing is very clear. I want Majid to respond to that sense of alienation is over. Because if it would have been alienated Kashmir as propagated by certain sections of media earlier, that Kashmir is under lockdown as propagated by certain sections of media, I think this is the living example. There is nothing like that. And youngsters, female punches, are coming all the way from Badgam to participate and speak their mind, which means there is zero fear. But yes, hopes are high. See, Sakal, it's not only about what kind of fare you have or what kind of fare you don't have. The reality is that for the past 6 months, Kashmir is comparatively peaceful. There has been no civilian killing. But it is for the government of India to encash this opportunity, that if people are dormant or people are happy, this opportunity needs to be encashed. The Naya Kashmir is not supposed to be only a slogan. It needs to be transformed into reality, where you have Vikas, where you have corruption-free government, and that foundation of strong Naya Kashmir can be laid through a good governor's rule. Okay, good governor's rule. Yes. ये बार-बार इस पूरे 1 घंटे के डिस्कशन में गवर्नर्स रूल को कंटिन्यू करने की बात आई, और ये अपने में ही एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, पॉजिटिव मैसेजिंग है इसमें. आप क्या मानते हैं? Because you're the senior most here, sir, representing Kashmiris here on the show. हम मुतनफिर है पुरानी गवर्नमेंटों से.
जब हम पुराने लोकल गवर्नमेंटों से मुतनफिर हैं, नफरत उनसे करते, इसका मतलब उसका अल्टरनेटिव है कि गवर्नर रूल हमें पसंद है। ओके लेकिन उसका जो करप्शन है, हाँ। अब भी वो करप्शन है। मैं ग्रास रूट का हूँ, अब भी वो करप्शन मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपको थोड़ा सा एडवाइस करना है कि वो आदी हो गए हैं, पिछले गवर्नमेंटों के आदी लोग हैं, अभी उनसे करप्शन नहीं गई है। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि प्लीज आप बाहर के अफसर 6 महीने के लिए यहाँ लाइए, तब जाकर यहाँ की करप्शन खत्म हो जाएगी। आपके पास IAS अफसर है, IPS अफसर है यहाँ के, उनको लाइए। जो बाहर के IPS IAS अफसर है उनको यहाँ लाइए 6 महीने के लिए, ताकि यहाँ की करप्शन खत्म हो जाएगी। जो यहाँ पाले हुए कुछ लोग हैं यहाँ के प्रीवियस गवर्नमेंट के, उनकी करप्शन की आदत है, उनके जरिए करप्शन अब भी चल रही है। मैं ग्रास रूट की बात करता हूँ। I just want to make it. दूसरी बात मैम, जो हमारा इंडस्ट्री और हमारे जो कारोबारी लोग हैं यहाँ 6 महीने से बैठे हुए हैं, उनका कुछ कर्ज माफ कीजिए। हाँ, जो स्किल लेबर है उनका कुछ कर्ज माफ कीजिए, क्योंकि वो बेचारे इस वक्त पिट रहे हैं, उनको बैंक काट रहे हैं। Sponsored and propagated by earlier regimes here in Jammu Kashmir. That's what the local Kashmiris are saying. That's the reason why they want an extension of governor's rule. It's not basically extension. What basically they're trying to say is that as of now, the governor's rule is what really suits them. They've welcomed it, they've hailed it. But what they want is this corruption, which has been so deep into the system, Tausif, from the previous regimes, whether it is National Conference or PDC. It will take some time to weed out, but that is what has been always your obstacle. Am I interpreting it True, correctly? absolutely right. I totally agree And with please you what rotate you the said. mic also, yes. I just want to make 2 points here. One, I don't agree with माजिद साहब जो ये बार-बार गवर्नेंस रूल के एक्सटेंशन के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है। मैं चाहता हूँ जो हम नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, जिनके पॉलिटिकल, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। इंडीड मैं बताना चाहता हूँ, जब भी यहाँ पे गवर्नेंस रूल रहा है, चाहे जगमोहन साहब से रहा है, चाहे हमने खुद वोहरा साहब का बेस्ट रूल देखा है जिनने बहुत अच्छा काम किया है, उसके टाइम में कोई करप्शन नहीं था। जब हमारे पॉलिटिशियंस आए तब करप्शन बढ़ गया, बाकी चीज़ें, बट हम यस इट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन। हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं जो हमारा यहाँ पे तबका है, जो नौजवान तबका है, वो आगे आए और पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट करे। हमें किसी का वेट नहीं करना है, ना हमको किसी से मांगना है। लेट्स स्टार्ट। I want to make some points here. जो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पे ज़रूरी होनी चाहिए। और जो इंसाफ ने कहा था कि जो बाहर से लोग आने चाहिए, इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्क कल्चर लोगों में नहीं है। Debatable topic. Okay, you have voiced your opinion. जी। इक्तिसादी प्रॉब्लम्स अलग है, सियासी प्रॉब्लम्स अलग है। हाँ। मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ इक्तिसादी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, कोई नहीं, it's okay, हाँ। हमारी जो इक्तिसादी प्रॉब्लम्स है, हम स्किल डेवलपमेंट को अगर चाहे तो स्किल डेवलपमेंट को हम ज़्यादा तरजीह दे तो बेहतर है। ठीक। और हम चाहते हैं कि यहाँ का जो यूथ है, इसको इस मुसीबत से निजात मिले। ये बहुत सारे मुसीबतें झेल रहा है। वो पेल्टिंग का जमाना खत्म हो गया है। वेरी गुड, खत्म हो गया, बहुत बेहतरीन। और लोग आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ का यूथ जो है ये पूरा सपोर्ट कर रहा है। और सरकारें आते हैं जाते हैं। Kashmiris telling on the national television that gone is the era of stone pelting, and I think that sends a very, very positive message. Stone pelting is over. The youngsters are ready to participate in political process. Many of them are saying Kashmir is election ready, but at the same time, many of them are also saying that this political process will take some time, but the administration led by the governor, in fact some of them have been asking for the extension of the governor's rule, but what they're trying to say here is that aap jo bol rahe the ki as of now it's a workable solution. Results are there, but yes, there is a sense of restlessness, there is some sort of hurry, because these people have been at the receiving end of lot of turmoil, lot of disturbance at all level, mental, psychological, economical. Empowerment is the solution. As you talked about the previous regimes, their role, their contribution, so I think we should not umbrella label all the politicians. कुछ politicians यहाँ पे रहे हैं, those who have made a huge difference, जिन्होंने बहुत काम किया है, and there are people who still pine their political aspirations on them. So that's my point. So about politics. Okay. Final, Tausif, if you want to add a quick one, I will come to you. Yes. जो यहाँ पे नौजवान बैठे हैं, यहाँ पे जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं। हम अक्सर मिलते हैं और बात करते हैं।
मे बी कुछ डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी होगा, लेकिन हम पीस चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं हम एक नए हिंदुस्तान का एक अच्छा हिस्सा बने। मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी, काफ़ी टाइम से मेरे इसमें था कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ आर्टिकल 370 जब ये हुआ था, अगस्त का महीना काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेस रहा हर तरीके से, बट जैसा कि आपने कहा कि देयर वाज नो ब्लड बाथ थैंकफुली, बट डू यू थिंक इन द लास्ट 5 months the process has been smooth in terms of transition, Tausif? मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, Troops have been pulled out. You see, there's no एब्सोल्युटली yes. एब्सोल्युटली वो एक अच्छा वेलकम स्टेप था जब ट्रूप्स को वापस बुलाया गया था, और जब आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई भी सिविलियन कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जो दूसरे हमारे यहाँ पे परेशान करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को मारा, उन्होंने सोपोर में एक कमसिन बच्ची पे फायर किया और एक फैमिली में फायर किया। तो कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे जो इस कॉन्फ्लिक्ट से रेलेवेंट थे और जिनका एक बिजनेस बन गया था इस कॉन्फ्लिक्ट से, उनकी दुकानें चलती थी और आज वो बंद हो गई है। पीस इज द सोल्यूशन। जब तक कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक इशू है, तब तक आपके काफ़ी लोग रेलेवेंट होते हैं। अब वो इररेलेवेंट है और हम चाहते हैं वो कभी आगे ना आए, ना हम उनको मौका दे। पीस इज द सोल्यूशन। क्या एग्जैक्टली देखिए, जैसे मतलब ताउसी साहब भी बात करते हैं किलिंग्स के बारे में, हमने लगभग पिछले 70 साल से खून खराबा ही देखा है। अब आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 70 हम एक नए हिंदुस्तान और नए कश्मीर की कल्पना करते हैं कि आने वाले वक्त में इस जो नया कश्मीर में आप पंडित्स की वापसी की बात करेंगे। पंडित्स की वापसी हम पहले से करते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये कहूँगा कि तब हम, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द हम में से बहुत सारे ऐसे तब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से आज उनको हम ये मतलब उनको जो उनके साथ गुजरा हुआ है वो तो हम वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से हम उनको माफ़ी मांगना चाहते हैं। मीर वांट्स टू मेक अ क्विक पॉइंट। कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर सोसाइटी का हिस्सा है, एंड कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट देम। वी वांट देम बैक। हम चाहते हैं वो सिर्फ वापस ही नहीं है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जो उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है दे शुड गिवन देम बैक, एंड वी वांट देयर लाइफ टू रिज्यूम विद डिग्निटी। बोलिए। अकेलापन महसूस कर रहे हैं आप? अकेलापन महसूस कर रहे हैं? हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बिना पंडितों के यहाँ एक रहन सहन था हमारा। हमारे बुजुर्ग बोला करते थे कि इनके जो हमारा भाईचारा था पिछला सारा कुछ खो गए हम, इसलिए आइंदा हमारी उम्मीदें अच्छी हैं और तो इवन भी दुनिया उम्मीदों पे ही कायम है। और यहाँ का जो यहाँ का जो जवान है मैम, आप हम चाहते हैं कि यहाँ का जो जवान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे कि इनकी जज्बात की कदर करे। अच्छा। क्योंकि यहाँ का जो जवान है ये स्किल डेवलपमेंट से बहुत पीछे है। अगर इनको जो किसी बैंक में इनको अप्लाई करना हो, किसी इंडस्ट्री में अप्लाई करना हो, इनकी इतनी फॉर्मेलिटीज़ है, सालों भर लग जाते हैं इनको। और हम चाहते हैं कि इनकी ऐसी फॉर्मेलिटी हो ताकि ये रोज़गार कमा सके, और बहुत सारे मौके हैं कि जिनसे ये मुस्तफीद हो जाएं। Empowering youth, skill development and employment. Yes, you wanted to make a quick point. मैं पंडित जो हमारे कश्मीर के पंडित हैं उनके बारे में बोलता हूँ। मैं इचगांव में रहता हूँ, बड़गांव में इचगांव। 22 घर मेरे पंडित है। मैंने खुद 95 में एक शायर का भगवती मंदिर बनाया। ये है कश्मीरी। मैंने दिखाया कि हम सेकुलर कश्मीरी है, पंडितों के भाई है। मैं चाहता हूँ कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 46 कॉन्स्टिट्यूंसी है, होम टाउन इनका हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के पंडितों का होम टाउन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बने। अगर वो गांव में नहीं जा सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी के हेड में उस कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे पंडितों का एक होम टाउन बने, और यहाँ 46 होम टाउन बने चाहिए पंडितों को, उनके बगैर हम अधूरे हैं। माजिद, फाइनल कमेंट्स। This is not supposed to be only about peace in Kashmir. It's about sustainable peace and prosperity of Kashmir, and along with the return of Kashmiri Pandits, not in separate colonies, but as a way of coexistence. Kashmir has been about mutual coexistence, and it has to be again in future, and that future, inshallah, I believe is possible if Modi ji makes a stand on that, because he says sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas. So the vishwas of people of So Kashmir Modi government is has in vishwas of you Kashmiris? No, we have a vishwas that there will be vikas, corruption free vikas in Kashmir. We have a vishwas that our aspirations will be taken on account. So you have vishwas on him?
See, definitely we need to have. For some reasons, we need to have. We are a part of the country. We can't say we won't have a Vishwas on it. We need to keep our Vishwas. On this Just one fantastic point. note that Umeed pe duniya kaim Umeed hai, pe so we duniya have that kaim hai. Vishwas on him. We have that Vishwas on Modi government. Well, that's what these handful of Kashmiris representing various segments of society, civil society, coming from north, south, far-flung areas, saying that we have Vishwas on Modi government, but it is definitely a very, very long road ahead. Some of them very restless about the fact that 6 months, not much has been covered, but yet at the same time very, very optimistic and very hopeful that lot has been done and a lot will be done. And the biggest headline that I think has come out of this show is that they are very, very satisfied as of now as far as the delivery, the deliverables of the current governor's rule is concerned. But at the same time, they're saying the development has been aligned with democracy, development has been aligned with normalcy. Naya Kashmir has hailed this political process. Naya Kashmir is waiting for Kashmiri pundits to come back. Naya Kashmir, most importantly, has embraced the abrogation of Article 370, but with the promise that this is going to be new beginning, Naya beginning in various sectors. Development, peace is the solution, and that is the message that has come out from this very, very exclusive and special episode, DD Dialogue, Naya Kashmir, the winds of change. Real stakeholders very, very optimistic about the change that awaits us, the change that they are waiting and expecting from Honorable Prime Minister Narendra Modi's Naya Kashmir vision. Thank you so much for tuning in. We also thank our DD Kashmir staff for facilitating this very, very special show from this very, very majestic tulip garden and botanical garden nestled in the heart of Zabarwan Hills. We started from there and we are going to end this show with that note. Namaskar and thank you so much for tuning in.